You're photographing me with giants. You're the giant, mashallah. MashaAllah, both of you. Ustad Karim Sahab is also. Always a pleasure. Always a pleasure. صلوات على محمد وآل محمد. Kindly introduce. My name is Shabih Al Hasan. I'm one of the neonatologists, and we call critical care newborn. And it's what I do, ladies and gentlemen, over the next 35 minutes or so, is to go through why should we be interested in the Sustainable Development Goals. Many people don't even know what they are, and particularly from an Islamic country perspective. And to do that, one has to kind of look back and see what happened in the Millennium Development Goals period, and I'll do that. I'll spend a little bit of time on looking at some of the key drivers and determinants of change, painful as that may be, but it's important to understand those to see why things haven't improved, and when they have improved, how have they improved. We'll talk a little bit about issues of governance, tremendous disparities and differences. Brazil and parts of the Middle East, but in many other regions, including our own South Asia and parts of Africa, the reduction was not as remarkable. Thank you so much for giving me this opportunity. Imamia International Conference. क्या कहेंगे इसके बारे में, आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में? वेल, ये मैं पहली मर्तबा शामिल हुआ हूँ इनकी कॉन्फ्रेंस में, और जो मौजू चुना गया था वो भी ज़रा गंभीर किस्म का मौजू था मेरे लिए, बट बड़ी खुशी हुई है मुझे यहाँ शामिल होकर, और ख़ास तौर पे जो सवाल जवाब हुए हैं, इसका मतलब ये है कि लोग, ख़ास तौर पे इमामिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो इस इस्लामी ममालिक में जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं, जो मुज़मरात हैं माँओं और बच्चों की सेहत पे इन्वेस्ट ना करने के, उनके बारे में ना सिर्फ शऊर रखते हैं बल्कि जज्बा भी रखते हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए। तो मेरा आज यहाँ आके बात करने का मकसद यही था कि एक तो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाई जाए इन मौज़ूआत पे, दूसरा ये कि इस पे जो काम हो सकता है, जो इसमें इंटरवेंशंस हो सकती हैं, जो इसके तदारुक के लिए काम किया जा सकता है, उस सब पे भी गुफ्तगू शनीद हो। तो उम्मीद है कि उसमें कुछ कामयाबी हुई हो। चाइल्ड हेल्थ केयर इशू है दुनिया भर के लिए, आपके ख्याल में इस मसले को किस हद तक हल किया जा सका है और किस हद तक हल किया जा सकता है? देखें, हल तो हमारे सामने है, मगर पहली बात जो मैं आपको कहूँगा मैम भाई, वो ये है कि बच्चों की सेहत को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको माँ की सेहत देखनी है। तो हम माँ और बच्चे की सेहत को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम इनको देखते हैं मुस्लिम ममालिक में, तो इसमें कई बैरियर्स, कई इसमें मसाइल हैं जिसमें काफ़ी हद तक ताल्लुक़ वसाइल से ज़्यादा लोगों के प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और ख़ास तौर पे हमारी लाशऊरी तौर पर जो एक ज़हनियत हो गई है जो कि औरतों को उनके हकूक़ पूरी तरह नहीं दिलवाती, उससे ताल्लुक़ रखती है। सो इस चीज़ को अगर हम देख सकें, टैकल कर सकें, जिसको हम सोशल डिटर्मिनेंट्स कहते हैं हेल्थ के, तो हेल्थ के मसाइल पर काबू पाना इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भुट्टा साहब, थैंक यू सो मच। Always good to see you, man. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I would like to invite Dr. Naweed Haider, a good friend, a brother. We call him our fourth brother. So, Dr. Haider, please come. I'm really honored to be here and to speak to all of you, and I hope that when I'm done, you have a good understanding of the spinal column, causes of spinal pain. 3D award, thank you. And I've been given the task to introduce you to a person whose resume probably will have volumes, if not pages. And having really had Dr. Bhutta give his talk, I think it's hard act to follow in the clinical field. The idea is to really talk about human intelligence and artificial intelligence and machine learning. So what I will do is to define what really intelligence something. So that really creates interesting connections in the brain. So all of these interesting capsules, and these are little things that you ingest. They will go through your GI,
and they will look for any problems in your GI tract. It sees the polyp, it sends a signal outside that there is a polyp at this location. Do you want me to take care of it, or are you going to really operate and take it out? I need to your neuroplasticity that this dog has shown. And he's so humble whenever we have asked him to come. Dr. Naweed Syed in 3D, and who would like to present it to you? मामले की जानिब से आज जो ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट है जिसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स बट नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो दुनिया भर से यहाँ पे ख़ासतौर पे नॉर्थ अमेरिका से इकट्ठे हुए, तो उसमें ये है कि एक तो आपस में कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन, और फिर जो मुख्तलिफ शोबा हयात ज़िंदगी में जो भी एडवांसेस या एडवांसमेंट आ रही है, ये उनके आइडियाज़ को शेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इमामिया मेडिक्स दुनिया में 20 से ज़्यादा ममालिक में इनके ऑफिसेज़ हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैदर हैं, वो यानी इनके पूरे ऑपरेशन को रन करते हैं। आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर एज वेल। तो उसमें कोशिश यही है कि किस तरह से हम अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को और जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्पावर करके हम किस तरह से हेल्थ केयर सेक्टर में ले आएँ, ताकि वो जो है यहाँ की जो हेल्थ केयर की यानी मुख्तलिफ शोबे में जो कमियाँ हैं वो पूरी कर सकें। तो महबूब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा से आते हैं, इस किस्म के प्रोग्राम्स को आप कैरी ऑन करते हैं। लेकिन ये देखिए कि हमारे यहाँ ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि जितने भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सब बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी मज़हब, रंगो मिल्लत के मिल के इकट्ठे होकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि इंसानियत की उसमें फ़लाह व बहबूद हो। तो यही मकसद इमामिया मेडिक्स का था। ये मेरे ख़्याल में अब 15 साल के बाद से ये दोबारा से रिजुविनेट किया। डॉक्टर हैदर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये टोरंटो में माशाल्लाह आपने देखा कि हाउसफुल था आज भी, और ना सिर्फ यहाँ से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग आए। तो ये एक बहुत ही फ़ाल यानी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, दौर जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल हेल्थ कितना मिलाप है, और आगे चल के आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसमें मज़ीद कितना इजाफा होगा? देखिए, ये तो एक बहुत ही अहम एरिया है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा कि किस नहज पे पहुंच चुकी है। यहाँ तक के लोग कहने लगे हैं कि अब डॉक्टरों की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए, ह्यूमन का कोई रिप्लेसमेंट इस वक्त नहीं है। तो ये है कि लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है, इनको डॉक्टर्स बरूए कार ला के अपने मुआविन की हैसियत से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि आपके कोई भी बैकअप सिस्टम हो, आपका एक सेकंड ओपिनियन हो, जिससे आप वैलिडेट कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं गलत दवाई ना हो, गलत डायग्नोसिस ना हो। तो ये एक बैकअप सिस्टम है। लेकिन अभी देखिए, इसमें जो तरक्की आहिस्ता आहिस्ता जो आ रही है वक्त के साथ साथ, वो एक बहुत ही अहम स्टेप होगा। इसलिए हम चाहता हूँ कि हमारे ममालिक में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी, लोगों को, डॉक्टरों को इससे फेमिलियराइज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस ट्रेन को छोड़ दिया, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रह जाएंगे और ट्रेन निकल जाएगी, जिस तरह से आईटी में पाकिस्तान में जनरली हुआ है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या ये सही है डॉक्टर साहब कि अब तक इंसान ने अपना जहन का जो है वो 25% इस्तेमाल किया है? देखिए, ये तो एक मिथ है कि आप 25% इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए आपके हार्ट का 20% जो खून है ये दिमाग को जाता है, जिससे दिमाग की फंक्शनैलिटी, जिसमें आप समझ लीजिए कि पेट्रोल जो है वो आपका दिल सप्लाई करता है, लेकिन 20% से ज़्यादा वो कर नहीं सकता। और एक ब्रेन सेल है, उसको इतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी कि एक एयरबस को चाहिए होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये देखिए, ब्रेन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये इस वजह से नहीं है कि हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आपका हार्ट उनको इतना एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता, और क्योंकि उसने बाकी अज़ाओं को भी करना होता है, देखना होता है, उनको भी ब्लड सप्लाई करना होता है। तो लेकिन ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप जब पेयर कर देंगे बायोनिक हाइब्रिड से, तो इंसान की जो जहन की सलाहियतें हैं, प्रोसेसिंग है, वो और भी तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि यानी इंसानी जहन की इख्तरा नई नहज पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये शुक्रिया। थैंक यू सो मच। I think that when you even look at it from an Islamic discoveries and abilities to prolong life. Thank you so much. Can I just say a couple of things?
Thank you to both of you. Dr. Shabir it's like one of the scenarios you put here, co-chair of the program, that when the time finishes, somebody has to walk up on the stage and say, it's time to finish. So anyway, amazing job. Dr. Naweed Haider, so thank you so much for giving me this opportunity. You're welcome. So, let's talk about today's conference, Imamia International Conference. The conference is a wonderful setting to meet other people in your community and learn things that you may not see in other conferences. The reason I say this is we had very different lectures today. We had lectures on mental health, we had lectures on end of care life, we had lectures on artificial intelligence. So it's a wonderful conference to learn many different things, what people are doing in the community. Some of the experts in the community are presenting the incredible information and data and things that you might not get at any other conference. Why is it important to our society? Well, it's important for us to know who in our society is the leader, what they call thought leaders in various different fields. Like, for example, you had Dr. Naweed Syed today, who's a thought leader in development of the brain chip, which is the future. So we have people within our community that are leaders in the world. We should be able to share that with all members of our community. So the Imamia Medical Conference is one of the first steps to share that locally within Canada. But we, at the larger level, the Imamia conferences, international conferences, you can share this information with the whole world. Dr. Syed Haider, Dr. Sahab, thank you so much for giving me this opportunity, especially Thank for you this so much conference. for coming. We really appreciate it. तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी आपकी आज जो हमने देखी पूरा मेंटल हेल्थ के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से और डायबिटिक्स के हवाले से और स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवीद इमाम सैयद साहब की थी और एंड ऑफ लाइफ, तो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद क्या था और इससे हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा? ये शुक्रिया, ये सवाल बहुत ही अहम है और सबसे यूनिक बात इस कॉन्फ्रेंस की ये है कि ये मेरा ख्याल में वाहिद कॉन्फ्रेंस है जिसने इतने बड़े लेवल के जो स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको कम्युनिटी के सामने पेश किया है ताकि वो अपना काम और अपनी एक्सपर्टीज़ आम इंसान जो कम्युनिटी में जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं उनको वो समझा सकें आसान लफ्ज़ों। आम तौर पे ऐसे होता है कि ये लोग बड़ी बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में टॉक करते हैं, वो डॉक्टर सुनते हैं और उसके बाद आम पब्लिक को उसका इतनी समझ नहीं आती। लेकिन आज आपने जैसे देखा हर टॉक उसका लेवल ये था कि डॉक्टर्स भी इस्तेफादा कर रहे थे और कम्युनिटी के मेंबर भी इस्तेफादा कर रहे थे। स्पेशली जो लास्ट टॉक थी एंड ऑफ लाइफ केयर, अमेजिंग टॉक। ये हर घर में मसला है कि कैसे जो है ये कर सकते हैं, बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, डिमेंशिया के लोगों का, या जब लोग बूढ़े हो जाएं तो उनका फिर आखिरी डिसीजंस कैसे करने हैं। ये टॉक्स जो हैं ये हमारी कम्युनिटी के बड़े ही अहम मसाइल हैं। तो हमने आज सारी कॉन्फ्रेंस इस मौजू पे रखी कि मोटापा, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ नौजवानों की और बूढ़ों की लास्ट ईयर्स जो हैं लाइफ। और आप ये देख लीजिए कि सब हर कम्युनिटी में ये अहम तरीन मसाइल हैं कनाडा के और ना सिर्फ कनाडा में, पूरी दुनिया में। तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि आप जैसे लोग हमारे इस पैगाम को और हमारे इस एफर्ट को लोगों तक पहुंचाएं ताकि अगली दफ़ा लोग जो हैं वो और भी इसको सुन सकें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतना लंबा गैप हमने कनाडा में इस तरह की कॉन्फ्रेंस देखी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत ये है कि हम दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और इसी टॉपिक के ऊपर जो मैंने अभी बात की, हम नर्सिंग होम और एल्डरली केयर के लिए कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं न्यू जर्सी के। और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, तो हमारी सारी एफर्ट पिछले कुछ सालों में उस फंड को डाइवर्ट हुई। अब हम माशाल्लाह वी आर फ्लोटिंग, तो अब हम मोर एंड मोर। So I hope every year we can see इंशाल्लाह conference like that. Thank you so much. Once again, thank you. Thank you. For you today, I'm very, very glad and happy that and honoured actually that you've joined us, because we have keynote speeches, we have videos, we have recitations, we have awards to give out, and that's hopefully within the next 2 or 3 hours, inshallah. But first and foremost, we'd love to bless this gathering, bless your hearts and your souls and your minds with the words of Allah subhanahu wa ta'ala, the words of the Holy Quran. And I welcome to the stage Dr. Rahman for the mercy, and inshallah we will reflect on it together.
Is he alone, all of our prophets? In many neighbouring countries as well. He's a very light-hearted man. I can always hold a joke with him and hold a very nice conversation with him. He's always... We cannot match, obviously, this guy. We have to hire security because he is so popular all over the world. When I was talking to him, I said, look, this is the kind of conference we are doing. And he said, okay, so what do you want me to recite? I said, you know what, we should be neutral. And he looked at me. I said, is he talking a gear of a car? We're sitting on these tables, Dr. Naweed Syed, Syed Ibrahim. And I can name hundreds and hundreds of these people, Khalid Usman, and we cannot advertise. So I think it's by nature. But it's a day or a night that we can enjoy ourselves, inshallah. So I'd love to once again give a round of applause for Dr. Syed Haider. Please. So one thing that stuck out for me in her work is that she is a champion for gender equality. Part of this event and their president, Dr. Yasir Haider, for putting this event together. As member of parliament, I meet many people, but when I see someone who is really doing the work which this humanity needs, it really touches my heart. And like knowing and doing some research on IMI Canada, that the work which they do, I think is really very important. And I don't want to do it injustice by just reading off a paper what this man has achieved and what he will achieve in the future. However, what I did notice to be with you, and thanks for that. In particular, I would like to talk to you about a new initiative that we are leading in the creation of a new medical school that will open in 2025. Provide better outcomes for patients. We need medical doctors to work with other healthcare professions in a very integrated system. And this is why we are in a much more respectful way. So we know that the process of finalizing the curriculum and the structure of this medical school, and I'm sure that we have some brilliant people in the room who can provide input and support. We listened to their hopes, talking about all those communities and expectations for the school, and incorporated that feedback. This will be in the medical school. For the Toronto area, the riding of York South, Western since the 2015 federal election. Very proud member of the Muslim Congress. There's so many now that we have a Congress. I also want to, of course, recognize my good friend Khalid Usman and really Syed Ibrahim as well. Thank you for everything that you do for the community. I was thinking about the work that you do, the responsibility that you put on yourselves, and the contributions that you make all around to leverage your own tax dollars that we... We're going to be welcoming a man who we are honoured to be in the presence of, a man who I've done a bit of research into. And Thank you, Ali, for the warm welcome. And I see that everybody has been fed, well fed, and all satisfied. And I'm sure my greetings will go easy over you. So thank you so much, Dr. Haider, for inviting me tonight. And I'm so honored to be here among all your esteemed guests. As mentioned, my name is Paul Chang. I'm the Member of Parliament for Markham Unionville, as well as the Parliamentary Secretary for Citizenship, Immigration, and Refugee. Thank you so much for inviting me. There were some guests at my table asking me how long I lived in Pakistan and if I know any Urdu. It's a tough question. Anyways, Assalamu alaikum khawatun Hazarat. जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम है पॉल चैंग
और मेरा है पैदाइश कराची की, और अगर आप जो कराची वाले हैं तो पता होना चाहिए कराची कहाँ है। सूबा सिंध में है, तो मैट्रिक पढ़ के ना मैं यहाँ आया हूँ। तो अभी कनाडा पे आया मैं 46 साल हो गया। तो MP बनने से पहले मैं पुलिस में सर्विस किए थे, 28 साल पुलिस में थे हम। और 28 साल के अंदर जो आखिरी जो 15 साल था, मैं डाइवर्सिटी इंक्लूजन की ऑफिस की इंचार्ज था मैं। तो इसलिए तो जो MC साहब ने जो कहा हमारे बारे में, तो हमारा काम है डाइवर्सिटी इंक्लूजन। और मेरी ये ख्वाहिश ये है कि कनाडा में हम सब एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल के रहें और एक साथ कामयाब हों। वहाँ सारे ख़वातीन लेडीज़ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ जेवरात बनाते हैं शादी के लिए और जोड़े बनवाते हैं शादी अटेंड करने के लिए। तो कराची बहुत अच्छा शहर है। जब मैं निकला था उस ज़माने में बहुत अच्छा था, अभी ज़रा मुख्तलिफ हो गया। बेगम आई है पिंडी से, शादी से पहले मैं पिंडी कभी गया नहीं। अगर आप पिंडी से हैं तो वो लाल कुर्ती की रहने वाली थी। अगर आपको पता होगा कि सदर के इलाके में जो मॉल रोड पे एक चाइना बूट हाउस है, अगर आप पिंडी से आपको पता होना चाहिए चाइना बूट हाउस, वो सदर के इलाके में, वो जो ऑनर है वो मेरा साडू है। मेरे जो पसंद की जो खुराक है, क्या कह रही हैं आप? बिहारी। ये बात नहीं, क्राई गोश्त, और वो भी छोटी गोश्त होनी चाहिए, बड़ी नहीं। Anyway, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर कि आपने हमें आज यहाँ मौका दिया। Amazing group of individuals who are doing fantastic work all around the world, and this is a show of support, to be honest. All of us are here to support this institution to go and do the work and go to the new heights that it can. Give it up for Ali Fadl. His recitation is inspirational. In any case, I'd love to welcome onto the stage, please put your hands together for a medical joke. A patient comes into the emergency department and has a very deep cut. And so the doctor is looking at the laceration, basically cleans it up and freezes the patient and starts to repair the lungs. To take me higher, away from desire. I spent 10 nights in grief. I'm hoping for peace, but I don't want to sleep. And when I close my eyes, Karbala, your land is in my mind. And I can't stop these tears, no I won't find peace tonight. This fire in my heart won't die, and even in my dreams I cry to you. I promise, please just give me one more to hear your story. I'm helpless, wishing I could save your life, but you give me courage. Away from desire, I spent 10 nights in grief. I'm praying for peace, but I don't want to sleep. And when I close my eyes, Karbala, your land is in my mind. And I can't stop these tears, now I won't find peace tonight. This fire in my heart won't die, and even in my dreams I hear the cries. I see bodies laying side by side, children screaming, I know they won't find peace tonight.
these tears on their own. When I answer the questions alone, yes, they useless. These tears. A Lifetime Achievement Award for Professor Naweed Syed. He doesn't need awards. He has had awards from the presidents and the prime ministers, but it's the honor for IMI to be able to give him the award. Thank you, Naweed. It is my honor to recognize Dr. Yasir Haider